Hello student, welcome back to your online class. Today we are going to start the grammar section, and in this section we are going to start the topic subject verb agreement. Okay, now the topic is the subject verb agreement. Okay, now what is the subject verb agreement? Basically a singular verb, थोड़ा सा इसको normally जानते हैं, a singular subject needs a singular verb, in the sense whenever the subject is the singular, the verb is always singular, and the subject is the plural, the verb is always plural. Understood? So whenever a singular subject needs a singular verb and a plural subject needs a plural verb. Okay, and the basic rules: singular subject must having singular verb and the plural subject take the plural verb. Understood? This is the subject verb agreement. Now let's start the topic, the rules of the subject verb agreement. Very first, starting with the pronoun you. Okay, तो you के साथ में कौन सी verb लगेगी? Let's see the example. Whenever we using you always takes the plural, because you always work as the plural subject. See the example, you were invited to come. So you जो है the subject is the plural, so verb is always plural. Understood? You are asked to clean the room. You sing so well. So subject you जो है this is the plural and the verb is always come plural with the you. Understood? Next, second one is, if a sentence begins with here and there, the verb agrees with the subject which follows it. Okay, now जो subject जो होते हैं, whenever the subject sentence is starting with the here and there, okay, जो subject जो है जो here and there से start होते हैं, तो हमारा जो subject जो उसके अंदर है उसको देखिए. Let's see the example. Here are the ways on how to preserve meat. Here are the ways. So यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है, हम किसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. हेयर आर द वेज. सो वेज इज द प्यूरल. सो यहाँ पे कौन सा हमें फिल करना है? वी हैव टू फिल द प्यूरल वर्ब. ओके, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल. देयर डैश इज अ यूज गैप. ओके, गैप, नॉट द गैप्स. सो दिस इज द सिंगुलर, सो द वर्ब इज द singular. Understood? So यहाँ हमें देखना पड़ेगा, whenever you find any kind of blank and the sentence is starting with the here and there, so see this these words in the sentence कि वो अगर singular है then we have to put the singular verb. If this word is the plural then we have to put the plural verb. Next, if two subjects, one single and one plural, are connected by either or, neither nor, the verb agrees with the nearer subject. Now listen, if the sentence started with the either or neither nor. Okay, जब कोई भी sentence है जो either और neither nor से start होते हैं and there are two subject in the single sentence, तो we have to fill the verb according to the nearer subject. Whenever there is a blank, so blank के nearer जो subject जो है, जो blank के जो nearer होगा, suppose this is the blank. Okay, so this is the nearer. Okay, nearer is the coach. So coach is the nearer. Okay, so this verb is belongs to this. Understand? And in this sentence here, either the conductor or the singers. Okay, so ये देखो conductor and the singers. This is the singular and this is the plural. Now we have to fill the verb here. Okay, now nearer to the blank. इस blank के nearer कौन सा? Suppose if there is a blank, तो इसके nearer subject है plural. So we have to fill the plural verb. Understood everyone? तो आपको क्या ध्यान रखना है? Remember one thing, whenever there is a blank and the sentence starts with the neither and either and there are two subjects in the sentence, then we fill the verb according to the nearer subject to the blank. Next one, a singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, and no less than, takes a singular verb. If you find these types of words, okay, if you find these types of words, okay, so जब भी ऐसे words होते हैं तो these words take the singular verb. Let's see the example. Jack accompanied by. Okay, accompanied by his sisters. आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे. यू थिंक दैट यहाँ पे सिस्टर्स है तो आप यहाँ पे आर फिल कर दोगे. बट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस कम इन अ सेंटेंस, यू ऑलवेज फिल द सिंगुलर वर्ब. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स.
okay, daddy as well as my brother. So this is the phrase and you have to fill singular verb. If the phrase is this, then the verb is singular. Understood everyone? Next one is singular subject joined by and require a plural verb except when they mean one thing. Now whenever there are two subject in a sentence and connected by and, okay, in this case you have to fill plural verb. This is the subject 1 and this is the subject 2 and this is connected by and. So here we have to fill plural verb. The verb is plural. Okay, my teacher and friend is here. Now यहाँ पे आप बोलोगे there ma'am there is a my teacher and the friend, two subject and connector is and. Now listen students, here is the determiner my. Okay, यहाँ पे determiner my नहीं है, ठीक है. It means जो teacher है वही friend है, they both are the same person. Suppose यहाँ पे भी होता my teacher and my friend. In case अगर sentence होता my teacher and my friend, it means the both subjects are different. Now here my teacher and friend is the same, a single subject. That's why we use here. Understood? And suppose ये तो आपका यहाँ पे हो गया कि आप याद रखना whenever you are using and, remember one thing about the determiners also. Next one is two singular subject. Two singular subject joined by either or neither nor take a singular verb. Okay, we have complete, ये हमने पहले कर लिया. Either जो कोई two subject है, either mommy and or daddy is coming with me at the, ठीक है. So either mommy, it means either या तो mommy और daddy दोनों में से एक. तो whenever these sentence, these kinds of verbs come in the sentence, always fill the singular verb. Okay. Next is if a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. Okay. Now here one of the boys. Okay. Now these are the phrases. One of the boys, one of the members. Okay. So अगर ये phrases अगर sentence में, the sentence starts with these kinds of the phrases, then you have to fill the singular verb. Verb is singular. Understood? जब ये phrases से start हो, one of the boys, one of the members. Okay. Next one is the indefinite pronouns several, few, both, many, others are always plural. Okay. Now जब भी ये words आते हैं, whenever ये जो words आते हैं, they always plural. ये सभी words जो है plural है, so that's why we use plural verb. Okay. They all represent plural form. So whenever these words come in a sentence or words start with these sentences, the sentence start with these words, then we have to fill plural verb. Next one is the indefinite pronouns some, most, all, noun are singular or plural according to the meaning of the sentences. Okay. Now what happened अगर जो words जो होते हैं, some of the girls, okay, some of the ice cream. Now here you have to look at this word. If this is the plural, ठीक है, plural, then the verb is plural, and the verb, this is the singular, then the verb is singular. So the words start with the some of the girls, some of the, then see the what is the given the last word in this phrase. If the word is singular, then the verb is the singular. If the word is plural, then the verb is plural. So the next one is when any of the following indefinite pronouns is the subject, the verb is a singular, everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every,
nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone. ओके, सो जब भी ऐसे ये सेंटेंस जब आते हैं देन वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. ओके, सपोज द सेंटेंस स्टार्ट विथ एवरी मैन, so the word starts with every, so according to this sentence the verb is always singular, so here the verb is always singular. So students, please read all these sentences, all the points clearly, otherwise in exam आप गलत करोगे. ठीक है, सो ये पॉइंट्स है, इनको देख के ही आप देखना कि अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब हमें फिल करनी है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम. मनी, वेट एंड डिस्टेंस आर सिंगुलर इवन दे फॉर्म इन द इज द प्यूरल. नाउ व्हाट हैपन, अगर आपको सेंटेंस आते हैं, सपोज 2 years $1 million. ओके, जब ये यूनिट जब आती है, मनी, वेट एंड द डिस्टेंसेस दे ऑल आर सिंगुलर. ओके, सो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर. ये वर्ब जो है ये सिंगुलर आएगी बिकॉज 2 years, तो ये हमेशा ये वर्ड जो है सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अंडरस्टूड? So money, weight and distance, they always are singular and the verb is always followed singular. Now when the amount of money, अभी तो हमने सिर्फ मनी के बारे में पढ़ा था, if we are going to divide the money and separate the units, then the verbs is always comes plural. जैसे 525, जैसे पैसे कर लेते हैं, रुपीज़ जो होते हैं, सपोज हमने पैसे कर लिए 25 पैसे या 25 कॉइन्स वर फाउंड. ओके, नाउ हियर हमने डिवाइड कर लिए इनको, सो दिस इज द प्यूरल, सो वर्ब इज ऑलवेज प्यूरल. नाउ 60-100 पैसे बिल्स. ओके, यहाँ पे भी जो है हमने उसको डिवाइड कर लिया है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी कौन सी होगी, वर्ब इज प्यूरल. सो जब हम एक यूनिट की बात करते हैं तब तो वर्ब होगी हमारी सिंगुलर. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द, इफ़ वी डिवाइड द मनी, हम उसको डिवाइड पैसों में कर लेते हैं या यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देन द वर्ब इज प्यूरल. नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्यूरल. ये जो वर्ड्स हैं दे आर ऑलवेज प्यूरल. व्हाट आर द वर्ड्स? सी, पैंट्स, ट्राउजर्स, पाइलर्स, सीजर्स, shears, tongs, these all words are the plural. Suppose see the example, the pants. Okay, the pants are torn. ठीक है, तो ये word जो है ये कैसा है, plural, and the verb is always plural. The pair of scissors. Okay, the pair of scissors. तो यहाँ पे ये जो word है the pair आ गया है. It means now here is the word is the singular. Okay. Next one is certain nouns, though plural in the form, are singular in the meaning and therefore they take the singular verb. Suppose some of the words वो दिखने में तो हमें प्यूरल लगते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया. दीज काइंड्स ऑफ वर्ड दे लुक वेरी, जब हम उनको देखेंगे तो ऐसे लगेंगे इसमें एस लगा हुआ, इट मीन्स दे आर प्यूरल, बट एक्चुअली दीज वर्ड्स आर द सिंगुलर एंड द वर्ब इज ऑलवेज singular. Mathematics is my favorite subject. Okay, so mathematics is the only one subject, so verb is a singular. The latest news is alarming to the public. So the news is news. Okay, तो S इसका मतलब R नहीं लगाओगे आप लोग. Understood? Next one is when the word is preceded by a, it takes the plural verb, and when it is preceded by the, it takes a singular verb. Okay, now जब verb जो word जो है a number of students, okay, a number of students, तो यहाँ पे कौन सा होगा, R हमारा. the word, the sentence starts with us, okay, preceded with a, so according to this always take a plural verb. एंड द सेंटेंस स्टार्ट विद द अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेंटेंस है, मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इसके साथ में द सेंटेंस स्टार्ट विथ अ, देन द वर्ब इज प्यूरल, वर्ब इज प्यूरल. और द से स्टार्ट हो रहा है, देन द सिंगुलर. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डोंट सी दिस वन, है ना, इसको मत देख लेना आप लोग. आप सोचोगे स्टूडेंट्स जो हैं, आपको लगेगा इट सीम्स दैट इट्स द प्यूरल सब्जेक्ट, तो आप वहाँ पे आर लगा दोगे,
बट सी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इफ द अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस वन एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स देन द सिंगुलर वर्ब, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, व्हेन द फ्रैक्शंस आर यूज्ड, ओके, जब हम मैथ्स के फ्रैक्शंस जब यूज़ करते हैं तो हमारी जो वर्ब जो होती हैं वो कैसे यूज़ की जाती हैं, देखो इन अ सिंगुलर फॉर्म, 1/2 ऑफ द केक, 1/2 ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द that word, okay, nearer the blank, suppose this is the blank and just near इसके पास में कौन सा ऑब्जेक्ट है, if the object is the singular then the verb is always singular. now the 1/4 ये भी fraction है, now here this is the blank, now here the object is just near the blank is the employees, ये employees जो हैं ये कैसा है, प्यूरल है, तो हमारी verb कैसी होगी, verb is also प्यूरल, और यहाँ पे जो सब ये जो है केक कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, अंडरस्टूड। सो जब भी मैथ्स के फ्रैक्शंस आते हैं जस्ट सी द व्हाट इज द ब्लैंक, और ब्लैंक के नियरर कौन सा है, द वर्ड इज द सिंगुलर और द सिंगुलर और द प्यूरल देन द प्यूरल। नाउ दीज वर्ड्स एथलेट, पॉलिटिक्स, जिम्नास्टिक्स, जेनेटिक्स, दीज काइंड्स ऑफ द वर्ड्स जब भी ये आते हैं they always follow the singular verb, ये जब भी words आते हैं they always follow the singular verb. see the gymnastics is very popular among girls, okay, now don't इसको ऐसे मत कर देना कि आपको लगे यहाँ पे ऐसे, so you put the r, it's the wrong, is the singular verb is the correct. now gymnastics shown in the field today were outstanding. now the अगर determiner लग जाता है, if it the word is उसके आगे preceded है, the से start हो जाता है, then you have to fill the verb plural form, okay. so जब भी याद रखना अगर ऐसे words हैं उनके आगे अगर determiner नहीं है तो verb होगी singular, if there is a kind of determiner then fill the plural form, okay. so this is enough for today. We have completed some few topics of the subject verb agreement. We'll continue in next video. Thank you.